स्कूल में भी वही हो रहा है, स्कूल में भी वही हो रहा है प्लान से, तो उसके लिए मैंने सर एक सिस्टम को डाइजेशन सिस्टम उधर से डाइजेशन चालू होते हैं। ओके, अगर आपका आपस में डिस्कशन हो गया होगा, which chapters are left? Digestive system and respiration. बस दो ही चैप्टर बाकी है। सर फिर भी सर और 6 घंटे मतलब 5-6 घंटे के लिए सर कितने से दादा बस करे तो मैं तेरी 2 घंटे में शक्ल ना देखूं, पर क्या करूं, कुछ जैसे नमूने की देखनी पड़ती है। आजा तुम्हारे स्कूल के मार्क्स आ गए? बता भी दिया सर। कितना अच्छा है सर? क्यों क्या है 60 उससे ऐसा होगा ना, उसको 35 आया इसके लिए, तो तेरा भी 60 मतलब 6 मार्क्स तो नहीं ना। तो मैंने आपको पेपर भी दिखा था, अभी भी दिखा था, अगले हफ्ते लाता हूँ। कितना है मार्क्स? 61 72 सर 71 55 something. I don't know. बहुत तेरे हुए थे ना पेपर। Exactly 40 plus 52. Exactly. ये आदमी 152 ऊपर था। 72 35. अरे लास्ट तो वाटी बज आता बोलता ना। 63 53 या 33 कंफर्म, तेरा उसका डाउट ही है मुझको। पेपर दिखा दो। या गिनर पर 35 बोलो 35 है। Okay, we start with the next chapter, that is the digestive system. Okay, before we proceed to the digestive system, when I say digestive system, why there is a which under which life process is the part of digestive system? Which life building was Which life process? life process? Ingestion. Under which big heading is digestion or digestive system comes under? Breaking down. न्यूट्रिशन। चल आपके बुक में चैप्टर न्यूट्रिशन अलग दिया हुआ है, पर टेक्निकली व्हेन आई से फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी डिफाइंड, आई से देयर आर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जैसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन. So same way, one of the process is nutrition, the taking in of food for growth, development and various other activities is what I mean by nutrition. Nutrition is further divided into two main types. One, those which prepare their own food, those which cannot prepare their own food. What are they? Autotrophs and heterotrophs. Autotrophs and heterotrophs. Under heterotrophs, what are further classifications? Sir, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. So वो saprophytic. वो Saprophytic, parasitic and symbiotic. holozoic. Okay, holozoic पहली बार सुन रहे हो? Saprophytic, dead and decaying matter. Okay, parasitic, which feeds on other organisms but doesn't kill the host. Holozoic, an organism which kills the other organism or a part of it or consumes it. Okay, wherein it shows 5 processes. Uske sub steps. What are the 5 steps? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, and not excretion. Okay, so the 5 steps is what I am talking over here in digestive system. तो हम जो पढ़ रहे हैं
वो part of holozoic nutrition wherein the organisms consumes the other organisms, and it shows 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So अपन फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 5 स्टेप्स का मतलब समझना है. What is ingestion? Sir, Taking in food. digestion. Breaking down with the help of So breaking down of complex substances into simpler forms with the help of enzymes. What is absorption? absorbing the nutrients from the food. Assimilation. ये क्या है? ट्रांसफॉर्म होता है, नीचे नहीं जाता. Fourth, assimilation, utilization of the absorbed nutrient. उसको कहीं ना कहीं यूज तो करना है हमें. उस यूटिलाइजेशन को अपन बोलते हैं assimilation. What is left? Sir, excretion. Egestion. What is egestion? Throwing away the waste of the food. Throwing out waste from the food. Removal of food waste. चावल के वेतन Removal of unrequired parts of the food. Unrequired parts of the food. unrequired parts of the food. अच्छा, मतलब केला खाते हो, केले का छिलका इजेशन हुआ. From the body. केले का Throwing out of undigested food is known as egestion. Okay, so in this chapter we are studying the part of a nutrition is holozoic. इसके अंदर the main system comes as digestive system, also known as another name. Sir, That system is also known as alimentary canal, also known as gut. Okay, so now सबसे पहले sir, हम लोग holozoic लेंगे वाले. we are holozoic. Amoeba, human beings, or the higher organisms are coming under holozoic nutrition. अब सबसे पहले, why do I require a digestive system or digestion? Sir, because some part of the food is very complex part of the food cannot be absorbed by our body. Therefore, we need to break it down into simpler substances and then we can absorb it. to absorb the nutrition nutrients also. from the food which we digest, and so that we can utilize the special nutrients in our throughout our body. Then if I say it is to absorb the simple food, तो simple तुम्हारे understanding से मतलब से which is a simple food? Can you give me example? Simple form of nutrient. Nutrients. Spinach, maybe sabji. वो nutrients capsule आती है ना. चलो अपन तुम्हारे हिसाब से चलते हैं. क्या चपाती इज सिंपल फॉर्म, मतलब चपाती ऐसे स्किन पे चिपकाया तो एब्जॉर्ब होना चाहिए. नहीं, तुम्हारा लॉजिक तो ये है ना. Sir, clear. The food is in a complex form. It is insoluble complex form, which first need to be broken down into soluble and simple form, which can be easily diffused into the cell. And for that, I required digestion. Chapati cannot be absorbed by the cell directly. ऐसा खाया चपाती ताट जाता है ऐसा नहीं है. सर अंडा खाया सर इधर अंडा आएगा ऐसा नहीं है. Okay? I need to break down to simpler form ताकि मेरी body utilize कर पाए. And that is why I required digestive system. Simple food example is glucose, amino acids, fatty acids, vitamins, minerals. Okay? So all that which cannot be further hydrolyzed are simpler forms. So I cannot directly utilize it because वो not in a diffusible form. So पहला paragraph basic introduction दिया हुआ है. The food that we cannot utilize as such in the body, it must be changed into soluble absorbable form to get absorbed by the blood for distribution in the body. Certain food like cane sugar are already soluble in water, but they require a breaking down of their molecules into smaller units
so that they could pass through the cell membranes of the wall or the gut. तो sugar cane का जूस होता है या very specifically यहाँ पे क्या cane sugar that is sucrose, इसको simple breakdown करेगा तभी यूटिलाइज होगा. तो if you take sucrose cane sugar ऐसा बोलेगा सब पानी में मिला दिया तो it is getting dissolved, तो मैंने पी लिया तो absorb होगा, ऐसा नहीं है. It has to first broken down to simpler form and then only my body can utilize it. Tomorrow तो you can say sir अपन वो जिम में जाते हो प्रोटीन पाउडर का मिक्स हो गया तो वो भी absorb होगा, नहीं. It has to be first broken down into amino acids, तब जाके मेरी बॉडी उसको absorb कर पाएगी. Now first definition of digestion और दो दिया हुआ है. Breakdown of naturally occurring foodstuffs into diffusible form. Naturally occurring foodstuffs in a diffusible form or any change which makes the food soluble and of such chemical nature that can be absorbed through living membranes. Dead membranes absorb कर नहीं सकते, मरा हुआ इंसान food absorb नहीं करता. So only a living cell membrane can absorb the food, and that is what the definition of digestion is. Sir, the solutions को भी ये they have Solution- to also go from digestion process. Yes, solution can have complex sugars, complex proteins. So till they are not hydrolyzed into simpler form, my body cannot utilize. वो soluble in water है, not in the cell membrane. वो पानी से अंदर जाएगा स्टमक में, पर स्टमक में सेल मेम्ब्रेन में जाने के लिए it has to pass through the cell membrane, which is not possible. अगर ऐसा होता तो मान ले अपन एग्जांपल लेते शुगर का जूस, तो ऐसा क्यों पी रहे हैं? ऐसा पीने की जरूरत ही नहीं ना. एब्जॉर्ब तो अपने को बॉडी में करना है, तो शुगर के जूस को हाथ को ऐसा जैसे लोशन लगाते हैं वैसे लगाना चाहिए ना, डायरेक्टली अंदर जाएगा एब्जॉर्ब होके. मतलब ही नहीं है, इतना खाने का कष्ट बचेगा, कि दांत हिलाने का कष्ट बचेगा, कि बहुत आलसी होंगे उनका कष्ट बचेगा. So for all that purpose directly cannot be absorbed. Up next is enzymes. What is the function of enzymes in the entire process? Sir, to break it Break down, down. act as a catalyst. Which catalyst? वो acting वो वाला कौन सा होता है? breaking down the food. But which catalyst it is? Enzyme is defined as biocatalyst. Biologically produced and acts as a catalyst. So biocatalyst, which speeds the rate of reaction, but without Participate. without itself getting involved into it. So enzymes play a key role in the digestion of food. There are hundreds of enzymes in addition to those involved in digestion, but the general characteristics of enzymes are as follows. All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. Can you give me example? All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. इनका नाम बोलना पड़ेगा. Example, salivary amylase syllabus में है. It is an enzyme जो protein है. But if I take a protein, keratin, skin chapter में, is it an enzyme? No. So it is a protein but not an enzyme. But by default, all enzymes are protein in nature. So it is something like all girls are students, but all students are not girls. I hope समझ में आया. Okay? All girls are students. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 girls है जो student भी है. But all students are girls. Okay, ये girl है, ये है, पीछे के 2 है, वो 2 है और ये 2 है. Okay, can I say they are girls? No. So that's exactly what it is. Then it acts only on one kind of substance called the substrate. It is specific. तो एक particular enzyme सिर्फ एक particular substrate पे ही work करेगा. It always form the same end products from the substrate. मतलब ऐसे नहीं है कि एक enzyme एक substrate को work कर रहा है और उसका product suppose X बनेगा. तो बाद में उस second enzyme और एक product पे work कर रहा है तो Y बनेगा. Every time it will form the same product from the same substrate. Then it only affects the rate of chemical reaction and always speed up the reaction. Like a catalyst, it can be used again and again. It acts best only at a particular pH, at a particular degree of acidity or alkalinity. Enzymes either function in alkaline medium or in neutral medium or in acidic medium. तो हर एक का एंजाइम का अपनी स्पेसिफिसिटी है, उसी रेंज में वो वर्क कर पाएंगे.
It acts within a narrow range temperature 35 to 40 degrees Celsius, which is called as optimum temperature. So I think that's about the introduction of enzymes. कुछ काम का नहीं है. So अपना chapter start होता है यहाँ से. The digestive system consisting of alimentary canal and digestive gland. So what are the various part of the alimentary canal in a sequential manner? सबसे पहला माउथ के बाद pharynx, esophagus, Stomach. stomach, Small intestine. Large intestine. rectum, anus. Actually that is not the order. सबसे पहला mouth, दूसरा the buccal cavity या oral cavity, then comes pharynx, then comes esophagus, then small intestine, large intestine, rectum and anus. Along with that, stomach and that part. Along with that comes the associated glands. So associated glands में अगर आप देखोगे digestive glands में there are 5 glands in our syllabus. पहला, second, gastric gland, third, liver, fourth, pancreas, fifth, intestinal gland. So ये 5 gland हम syllabus में पढ़ेंगे. Okay? अब चलन एक्सेप्ट तीन पार्ट अपन बाद में करने वाले हैं. सो अपन बाकी का जो छोटा मोटा पार्ट है पहला वो सब खत्म करेंगे. सो सर वो अपने जो इंटेस्टिनल और एक और कुछ वो हमारे बुक में पानी बोतल है, सबके बुक में है. सिर्फ वो ग्लैंड के नाम कहीं पे भी लिखे नहीं. सबसे पहला माउथ. When I say mouth, we have a wrong understanding about the mouth. ये बचपन से हम सीख के आ रहे हैं कि जॉनी जॉनी यस पापा ओपन योर माउथ. Okay, तो माउथ अपन ये कंसीडर करते हैं. That's not the mouth. Mouth is the starting point of an alimentary canal, which is guarded by a pair of lips. So ये माउथ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. इस पेपर there is a lip structure. What is the function of lip apart from other functions? Closing प्रोटेक्शन करते हैं. Sir, talking. Good. the mouth. Sir. Sipping, sucking, talking, and digest are all the functions of lips. Most important, it is sensitive. Okay, so जब आप कुछ टेस्ट समझ में आ रहा है, गर्म हो तो समझ में आता है. But sensitive, that's the function of the lips, and that is what mouth is. This mouth opens into a huge cavity. इसे अपन कहते हैं buccal या oral cavity. It is in this buccal cavity or oral cavity are present 3 basic structures. सबसे पहला teeth, tongue, and the third salivary gland. सिलेबस में सबसे पहला ग्लैंड जो पढ़ रहे हैं वो है salivary gland. So we talk one by one. teeth अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी डिटेलिंग बाद में पढ़ने वाले हैं. So when I say teeth, what is the basic function of the teeth? breaking food into small chunks. Starting of the eating, What is the function of teeth? breaking food into small pieces. Chewing, biting, grinding, tearing, all these are the functions of the teeth. So it helps in chewing the food, biting the food, cutting the food,
tearing the food, grinding the food. So all these are the functions of the teeth. In human beings, how many sets of teeth are being produced in a lifetime? 32. In human beings, how many set of two are produced in lifetime? Two. What are the two sets? Milk teeth and permanent teeth. Then, in human beings, the teeth are referred as heterodont. अब heterodont, hetero मतलब different, dont मतलब teeth. We have different types of teeth. Our teeth are not uniformly same, like a lizard, cow, buffalo, etc. Frog वगैरह उनके सब एक ही टाइप के होते हैं. हमारे में है नहीं. The reason is we are having different types of teeth: incisors, canines, premolars, and molars. Heard about this? Okay. So incisor का function क्या होता है? Cutting. Canines का? Tearing. Premolars? Molars? So premolars and molars are grinding part. Basic समझ में आया? Function अपना type of teeth वगैरह और structure बाद में कर लेंगे. फिर आता है so teeth, cutting, biting, chewing, tearing, grinding, all these are the function of the teeth which is brought about in the buccal cavity. Then comes, there is another structure in the buccal cavity known as tongue. What is the function of tongue? Sensation of taste. Sensation of taste. सबसे पहला function taste. Sir, salivary gland. Helps in speaking. Yes. salivary है ना, salivary amylase उसको secrete करने में मदद इस tongue secrete कर रहा है. नहीं सर. मदद कर. सर swallow करने में. So it helps in swallowing the food. इसके बीच में और दो फंक्शंस हैं. फूड लिया, टंग पे रखा, टेस्ट आएगा. उसके बाद क्या? निकलना पड़ेगा. वो लास्ट पार्ट है. चबाना पड़ेगा. So it helps in mixing the food properly with the saliva. टंग मूव कर रहा है. बोला ना. अब वो मिक्स कर जाए उसके साथ वो क्लीन भी कर रहा है along the jaws and everything. Most important thing, the tongue also helps in bolus formation. So जब वो मूव कर रहा है, क्लीन कर रहा है, वो एक फूड को एक शेप दे रहा है, and that is nothing but bolus formation. So that's about the function of the tongue. The entire tongue is sensitive in nature. It has receptors which are for different taste buds. So the front part is for the sour, the पीछे का part is for the bitter, etc. अलग-अलग zones, अलग-अलग part को describe कर रहे हैं. Then comes the first gland of the syllabus. What is the first gland of the syllabus? Salivary gland. How many salivary glands do we have? 6. We have Three. 3 pairs of salivary glands. What are 3 pairs? सबसे पहला parotid gland. दूसरा submandibular. तीसरा sublingual. अकलन. पहला क्वेश्चन जो इस पार्ट से आएगा वो है give the location of the gland. So what is the location of parotid gland? Gland of Front of the ear. Beneath the ears. Front of and beneath each ear. Then थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे is ear. Okay. इस तरफ होता है आपका the parotid gland. So in front and beneath the ear is your parotid gland. एक इधर एक इधर. फिर आता है second submandibular. सर वो Close to the lower jaw. Close to the lower jaw inside part. Okay, so it is the inner part of the lower jaw is present here submandibular.
मैंडिबुलर का मतलब होता है लोअर जॉ, तो सब में ना मैंडिबुलर के नीचे थोड़ा, सो सब इनसाइड द लोअर जॉ इज योर सब मैंडिबुलर। सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब था लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे टंग है, सो टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग, सो इट इज बीनीथ द टंग इज योर सब लिंगुअल। सो इधर एक दो, इधर एक दो, इधर एक दो, तो दो दो दो, total 6 glands is what salivary gland is. Now technically what does salivary gland secretes? It secretes salivary saliva. Saliva का function क्या है? sir lubricating the food, It softens, lubricates, it moistens. बोलस ये भी बनाने में बोलस हेल्प करता है बनाते सर, हैं। बोलस हाँ। ये बोलस का काम नहीं करता, बोलस का टर्म करता है, ये सिर्फ का मीडियम का काम करता है। It is made up of more water, so act as a solvent also in that case. Most important keeps thing. the mouth, keeps the sir mouth. saliva में starch का digestion। So अब saliva soften, lubricate, moistens, ये उसका function होगा। But chemically saliva is made up of salivary amylase, also known as thyline. ये याद रखना because that's the another name for salivary amylase. What is the function of salivary amylase? Starch. It's an enzyme which breaks down Starch into maltose. carbohydrates into Nice. simple sugars, और हमारे बुक के हिसाब से starch into maltose। सर ये सब पता है हमारे बुक में नहीं। सब कुछ दिया है। नहीं ठीक से पता सर है। जो अलग वो सब प्रोसेस है ना, वो एसिमिलेशन जो उनके बारे में लिखा है, वरना कोई यहाँ से नाम लिया है, तो आप ये सब जो बोल रहे हो वो सब अलग अलग टाइप वो सब नहीं लिखा है। हाँ दिया ये अमाउंट तो इस पे रख के इधर भी है। ये बात में दिया अलग कुछ देना चाहिए। So wrong है because the board में या स्कूल के एग्जाम में भी teacher expect you to write in the reaction format only. इनमें से Words में मायने रखता नहीं है. It has to be a reaction form because it is a chemical reaction. So carbohydrates in the presence of salivary amylase break down to simple sugar, or starch in the presence of salivary amylase break down into tomato. एरो के ऊपर फिर एंजाइम का नाम अगर वो लिखा नहीं तो मतलब क्या है? आज का फॉर्मूला उसे नहीं लिखना ना। इसमें ये रिएक्शन आएगा बट वेरी रेयर चांस, इससे इनडायरेक्टली एप्लीकेशन क्वेश्चन ही आएगा। व्हाट इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ओवर हियर? पर्सन इज ईटिंग चपाती or he is chewing chapati, after some time it tastes sweet. Give reason. starch breaks into maltose. Good, 0 marks. because of the salivary glands, the saliva that she is into the mouth and carbohydrates just cannot like to simple sugars. 0 marks. सर सलाइवा सलाइवा 71, 73, 68 इनके ऊपर सर जो हमारे डाउट नहीं है, कुछ भी कर कंफर्मेशन देते नहीं है। थे। कैसे आया? You are eating a piece of bread. After some time, it tastes sweet. You are eating a piece of chapati. After some time, it tastes sweet. You are eating a bowl of rice. After some time, it tastes sweet. Give reason. Then, have I asked the question in form of stars? No. No. When I asked question specific, chapati, bread, rice, whatever. So the first line is very defining over here. Chapati, rice, or bread is a form of starch.
पहला मुझे वो लिंक करना है, पापा ये स्टार्च है, then I need to say the salivary gland secretes salivary amylase which break down carbohydrate or starch into maltose or simple sugar. As a result, it tastes sweet after some time. डायरेक्टली स्टार्च लिखोगे तो मैंने क्वेश्चन स्टार्च में पूछा ही नहीं है, आई आस्क्ड यू चपाती राइस इससे. सो दैट्स अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च इनटू मार्कर्स. कोई डाउट है? कंफ्यूजन करने के लिए दे मे गिव यू एन एग्जाम, गिव द फंक्शन ऑफ टाइलिन. टाइलिन इज द older version name of salivary amylase. The IU इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री से IUPAC होता है, वैसे IUPAC इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री होता है. उनके हिसाब से एनीथिंग व्हिच एंड्स अप इन ASE इज एन एंजाइम. तो salivary amylase, lipase, trypsin. Trypsin is an older name, pepsinogen is an older name, renin is an older name. ये सब older name है जिनके प्रॉपर नेम अभी amylase, lipase ये सब किए गए. So that's about the salivary gland. अब if you see your textbook, अगर आप सलीना देखते हो जहाँ पे आपका सलाइवा लिखा हुआ है, salivary gland, parotid, submandibular, sublingual, duct से निकलते हुए they enter into the buccal cavity where they get mixed with the food and they bring about softening, moistening, lubricating. उसके बाद saliva लिखा है, it is slightly acidic, pH 6.8, fluid containing water 90%, 99%, salt, mucus and enzyme salivary amylase. So basically what is saliva? Water. Okay, 99% water है, 1% it is salt, mucus, enzyme etc. Saliva also denotes your body condition. अगर बहुत ज्यादा ड्राई है that means कि आपके body content water content is less. If too much then water content is more. Then functions of saliva. बुक में 7 functions दिए, एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे. या एग्जाम में सिर्फ एक ही फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वो है रिएक्शन फॉर्मेट. बाकी जनरलाइज फंक्शन यू कैन रीड. तो पहला लिखा है मॉइस्चर लुब्रिकेट द इनर लाइनिंग ऑफ द मोरल कैविटी. मोरल इज नथिंग बट बकल कैविटी एंड surface of the stomach to facilitate speaking and swallowing. Second, moisten and lubricate food which again helps in swallowing. Okay, कभी सुना है क्या टेबल एथिक्स? एथिक्स टेबल वाली. टेबल के एटिकेट्स होते हैं. हाँ क्या होता है सर, मतलब मुंह खोल के नहीं चबाना है. टेबल मैनर क्या होता है? सर 2 चमचे यहाँ पे रख दिए तो वो खत्म हो गया, ऐसे रख दिए तो चालू हो गया, ऐसे रख के खा रहे. गुड. पर उसमें 2 चम्मच होते हैं, क्या होता है? एक फोर्क होता है, एक एक होता है, नाइफ नाइफ भी होता है. देयर इज फोर्क, स्पून एंड नाइफ. इतना पता है? सर वो भी आता है सर, वो ये सब कुछ देते. सर वो स्टिक से निकाल. अब इमेजिन अगर आपका सलाइवा नहीं होता, देन फोर्क, स्पून, नाइफ और उसके बाद बाजू में छोटा सा स्कूप होता था. आइसक्रीम का स्कूप होता ना, वैसा छोटा वर्जन. हाँ वो सूप के लिए. That scoop would be used for अंदर डालेंगे. एक्लर खाया, हाँ चिपकता है, हाँ. तो ऐसे ही होता है. ओ All the food is stuck to the palate because soften, moisten, lubricate कर रहा है. अगर ड्राइनेस है तो फूड पूरा चिपक जाएगा. ऐसा छोटे बच्चे ना टपक रहे हैं वैसा करना पड़ता है. So that is why saliva plays an important role. So acts as a solvent dissolving some food particles to stimulate taste buds of the tongue. Helps food particles to stick together to form bolus. Fifth, salivary amylase converts it into maltose, जो important है. So fifth point important है. Sixth, cleans the mouth and tends to destroy the germs to prevent tooth decay. Salivate होना is a very good thing because it cleans the आपका teeth, tongue and everything so that the germs are not growing onto it. Then dryness in the mouth due to less water in saliva gives a feeling of thirst to replenish the water. That completes the saliva. अब saliva bolus बन गया which would be pushed by the tongue forward to the pharynx. इसको That was ना, which is pushed by the tongue forward.
फॉरवर्ड क्या सर? फॉरवर्ड तो मैं वही ध्यान दे रहा था. Forward. It pushes the food फॉरवर्ड backward into the esophagus. pharynx and esophagus. Okay. How does the food move into this esophagus? Sir, वो सब वो ऐसे Moves. स्ट्रामस एपिथेलियम टिश्यू होता है सब उसमें. It moves in a zigzag manner known as peristalsis. peristalsis. Problem क्या है? हमें word पता है, पर spelling की मावेन करके आए. Okay? We straight away write something else and then marks are zero. Then you have to be very specific in terms of spelling. Peristalsis. Okay? Now, what exactly is peristalsis? The wave of contraction along the gut, along the alimentary canal, is known as peristalsis. Now, ध्यान से पढ़ना वहां पे. The tongue presses upward and back against the roof, that is, इसको बोलते हैं palate of the mouth, and this forces the bolus into the throat of the pharynx. The back part of the roof of the mouth cavity, that is soft palate, closes the opening between the throat and the nasal passage. The larynx, which is located at the entrance of the windpipe, is pulled upward to bring it close to the back of the tongue when a flap called epiglottis. Food pipe, windpipe, और windpipe के ऊपर क्या होता है आपका? फ्लैप होता है epiglottis. तो ये बंद होगा तो फूड इधर ही जाएगा. Okay? So then to the opening, thus the only passage available to solid food is that of the gut, of the gullet or esophagus. Esophagus को gullet भी कहा जाता है. Once the food reaches the esophagus, it is conducted behind by a special movement called as peristalsis. Peristalsis is the way of contraction caused by the circular muscles of the gut pushing the food along. As the wave passes, circular muscle relax. Peristalsis occur throughout all regions of the gut. Mucosecreted by all the regions of the gut is slimy fluid which lubricates the food. अब peristalsis सबको समझ में आया? Alternate contraction and relaxation along the alimentary canal. बुक में जो नहीं लिखा है वो पूछ लो. I am standing right now. मेरे हाथ में वड़ा पाव है, मैं समोसा है. Imagine कर. Okay? इधर या ऊपर? नीचे. Against gravity, towards gravity. towards gravity. जो चीज ग्रेविटी से नीचे जाने वाली, उसके लिए पेरिस्टाल्सिस क्यों चाहिए? द फूड जाने ही वाला है ना, बस सर रूट के लिए. Stomach. सर बीच में अटक गया. ग्रेविटी से नीचे ही जाने वाला ना मैडम. सर तो थोड़ा मोटा मोटा खाना रहेगा, बीच में अटक गया तो क्या होगा? The food is able to compress तो esophagus से पास होगा ऐसा ही. Sir, lighter food ऊपर है, directly क्या बोल रहे हैं तो लाइट या बोलो. directly stomach पे जाएगा. Good. So what will happen? ऐसा हो गया स्प्लैश हो रहा है. सर स्प्लैश हो रहा है. हाँ जो एसिड रिफ्लक्स हो सकता. हाँ. अगर फूड बिना पेरिस्टाल्सिस से जाता तो ये ऐसे ही जाता. इफेक्ट होता है उसको. डाउट होता है. अच्छा. एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 1 साल, 2 साल, चौथे साल में थोड़ा क्रैक आता. स्टमक पे. छठे सातवें साल में शायद शॉर्टकट ट्रेड कर लेता. Okay? Why? If a water falls at one small point repeatedly, वो टाइल और सीमेंट को ब्रेक कर सकता है. स्टमक क्या चीज है? So repeated abrasions on the stomach part can impact the stomach. Thereby, to reduce the impact on the stomach, the food is slowed down. एक. दूसरा, all of you together come to sir doubt है. Can I justify the doubt? नहीं. But if you come one by one, yeah, batch wise, can it make a difference? Yes sir. So when the food, वैसे भी हम सिर्फ एक ही काम अच्छे से करते, ठूसना. So when you are just putting the food inside and engulfing it, what happens? Everything falls at one go. Impact हो रहा है और सब पे एक साथ आ रहा है.
Stomach is in confusion. भाई कितना डालना है? So it would partially digest and move the food ahead. But because it is going slowly and in a batch-wise manner, it is able to take care of the food. It is able to justify the digestion process, and that is why peristalsis is required. So peristalsis is required to slow down the food, enter the food batch-wise. That would create a great difference in the process of digestion. कोई doubt है? वही सर. Shall I go ahead? Yes sir. Next, then food going the wrong way. Wrong way मतलब okay, that is nothing but कभी कभार हमारे बॉडी में एंटी पेरिस्टाल्सिस होता है. हमारे बॉडी में बहुत जगह पे एंटी पेरिस्टाल्सिस होते रहता है, which is a part of requirement. पर इधर अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस हुआ तो not a part of a requirement. It is okay. So एंटी पेरिस्टाल्सिस क्यों होता है? सर अगर पेट ओवरलोड हो गया, क्या? पेट ओवरलोड. ओके, एक बहुत ज्यादा खा लिया. तो कुछ गलत खा लिया जो नहीं खाना सर चाहिए। बहुत ज्यादा खा लिया और पानी भी बहुत पिया। ओके, फॉलो गलत से फॉलो ज्यादा खाया पीना सेकंड बहुत एसिडिक खाया. थर्ड, the most important thing, it is nothing to do with stomach part. वॉमिटिंग होना स्टमक का कोई रोल नहीं है. Sir, हाँ, it is trying to take the germ out of the body. That is again a part of it, but it is to do with the brain part. Simple example, there are many people जिनको motion sickness होता है. कुछ खाया नहीं तभी हो रहा है. Okay? फिर some of them किसी smell के वजह से भी होता है. So all that is nothing but a part of the brain interpretation and not a part of the stomach. But what happened in antiperistalsis? The way उल्टा जा रहा है. The stomach opens up, मतलब उसके वहाँ पे walls होते open होते हैं और food acid reflux के वजह से बाहर भी आ सकता है. Then comes esophagus, लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कुछ काम का नहीं, जो 2 लाइन लिखे हैं. Then comes is the stomach, the most important. Stomach is a highly muscular J-shaped bag. Okay, एक J-shaped bag है जो highly muscular structure है. It is lined by cells which are forming the second gland of the syllabus. The stomach is lined by cells which forms the second gland known as gastric gland. What is the gastric gland secreting? Gastric juice. It secretes gastric juice. What is the gastric juice made up of? Inside. Spin. हाइड्रोक्लोरिक. सबसे पहला HCl. उसके बाद Spin. पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन. जब वो वजन में रहता है इनएक्टिव है. अब उसके अलावा प्रोरेनिन. प्रोरेनिन. ऑप्शन आपके बुक में रिएक्शन फॉर्मेट लिखा हुआ है, पर पहला कंटेंट पार्ट पढ़ लेते हैं. मैं वो में अलग ही नाम दिए. Stomach. ऐसा ही दिया हम लोग. The stomach is an elastic bag located below the diaphragm. So location of stomach, it is just below the diaphragm. In an average adult, it can hold 2 to 3 liters of food. पर हम उससे ज़्यादा ही ठूसते हैं. Okay? Its walls are highly muscular and churn the food throughout thoroughly to mix with the gastric juice secreted by the inner lining. Up to basic function of stomach. अगर 2 मार्क क्लियर है, the basic function of stomach is it brings about digestion and churning of food. What is churning? Sir, उसको कोई अलग form में convert कर देना. अरे पिल्ला के पानी में हवा है. सर चर्निंग अभी पढ़ा. फिर उसको सर उससे न्यूट्रिएंट्स The churning word कहाँ पे आता है इंग्लिश मीडियम में? When is the word churn used? अगर ये नहीं आया ना तो जाके सच्ची किधर तो डूबूंगा. सर नहीं सुने. बोलो ना. गाय खाती है ना सर. नहीं सर। गाय खाती हो चारा चर्निंग नहीं होता है. जो गाय देती है ना दूध, उसको चर्न किया जाता है लस्सी और बनाने के लिए. चर्निंग इज नथिंग बट मेकिंग द लस्सी और घी निकाला जाता है, उसको बोलते हैं. अब इसमें चिल्ड्रन चर्निंग इज बेसिकली मिक्सिंग.
मिक्सिंग ही लिख देते थे, चर्निंग का क्यों इतना इम्पोर्टेंट? The answer is mixing is like this. Churning एक particular order है ऐसे. So it is just this way. The stomach is moving. The circular muscles are keep on moving the stomach part. तो हमने खाना खाया, 2 घंटे का स्टमक में आया, ऐसा नहीं कि हम सर चर्न कर रहे. No, stomach inner inside it's moving, and that brings about proper thoroughly mixing of the juices in the stomach part. So churning और साथ में वो digestion भी create करेगा. अब, the opening of stomach is intestine is called pylorus. It has a ring of muscle sphincters to keep the opening closed like a wall to prevent food passing up from the stomach until it is thoroughly churned up. It is also prevent regurgitation from the duodenum. A similar sphincter termed cardiac sphincter is present at the front end of the stomach to prevent backflow of food into the esophagus. अब उन्होंने थोड़ा उल्टा लिख दिया. It also prevents regurgitation from the duodenum. Regurgitation का मतलब होता है बाहर निकलना. Duodenum से stomach में आना, so बाहर निकलना. And proper regurgitation is nothing but so when I say the cow, buffalo, they regurgitate their food from the stomach into their mouth, and that is why they keep on doing. तो मतलब सर वो चबाने के बाद डालते हैं वापस वो चबाते हैं आधा, उसको अंदर डाला जाता है और जब टाइम मिलेगा वापस बाहर निकाल के उसको प्रॉपर डाइजेस्ट किया जाता है. Because in the stomach there are bacteria getting mixed so that the cellulose can be broken. अच्छा उनका क्योंकि वो फूड बहुत ये होता है. सर ये duodenum इधर ये वाला रिंग जो है ये बनता किसी? Now, duodenum का duodenum stomach में This is the stomach part. Stomach के starting में और stomach के end में there are specialized muscles, circular muscles here, which form a ring-like structure. They are known as sphincters. अब stomach 3 part में divide होता है. जो front part होता है is known as cardiac. Then there is fundus and there is pylori. चलिए actually ऐसा नहीं है line wise, वो थोड़ा stomach थोड़ा properly नहीं बना है. It is a proper ऐसा. अच्छा duodenum small तो ये part आपका cardiac, फिर ये part आपका fundus और बीच में का part आपका fundus और ये होता है pyloric part. So आपको जरूरत नहीं है नाम लेने की, आपको सिर्फ front part is cardiac, the lower part is pyloric. So cardiac part पे there is a specialized sphincter known as pyloric sphincter, sorry cardiac sphincter. और यहाँ पे होता है pyloric sphincter. इसोफेगल बोला वो भी तो क्या? इसोफेगल स्पिंक्टर. हाँ, जो इसोफेगस की तरफ है इसोफेगल स्फिंक्टर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ड्यूोडेनम की तरफ है ड्यूोडेनम स्फिंक्टर. अब इनका जो पार्ट है ये क्या है? They act like a valve or they act like a gatekeeper. जैसे एक अपने वॉचमैन होता है जो गेट खोलता है बंद करता है, वैसा ही है. ये ओपन होगा फूड अंदर जाएगा, ये क्लोज होगा फूड बाहर नहीं जाएगा. So it stops the food from coming out. Same way, till the time the food is in the stomach, this and this will be closed ताकि वो properly churn कर पाए और digestion कर पाए. After 3 hours only this will open up and the food will now pass into the next part. तो ये कार्डियक स्पिंक्टर कभी अंदर जाने देता नहीं है. नहीं, वो होल्ड करके आगे भेजेगा बैच वाइज. अब आता है नेक्स्ट पार्ट. अब the inner lining of stomach is lined by specialized cells known as forming gastric gland secreting gastric juice. अब आपकी बुक में रिएक्शन फॉर्मेट देखना. Gastric juice is secreted by the inner lining of the stomach. It is a colorless, highly acidic liquid containing water, some salts, hydrochloric acid, and enzyme called pepsin. The acid serves two functions. It kills any germs which may have entered along the food. It activates pepsin to act on proteins. In fact, the pepsin is first treated as pepsinogen and is thus changed to pepsin by the acid. Pepsin digests proteins into peptides. अच्छा सबसे पहला, the gastric gland कभी भी pepsin secrete नहीं करता.
It secretes first is HCl. HCl which is highly acidic, somewhere about 3 pH के आसपास, तो that आपके स्टमक को जला सकता है, उतना रहता है. अब HCl का काम दो है. पहला, it activates the enzymes present in stomach to acidic medium, because इसके बिना कोई एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाएगा. उसका भी पहला फंक्शन आता है, it acts as a disinfectant. The so-called hygienic पानी पूरी, समोसा, वड़ा जो आप सेशन के बाहर खाते हो, so all that would have lot of microbes and everything. So जैसे ही वो मुंह के अंदर जाएगा, स्टमक के पास जाएगा, this HCl will kill all the microbes, trying to prevent you from infection. आपने बोला वो हाइड्रोक्लोरिक का जो pH लेवल इतना है कि वो स्टमक को जला सकता है. Good. Mucus. The inner lining is guarded by mucus, which protects the stomach from the corrosive action of HCl. अगर mucus नहीं होता तो हम नहीं होते. Next is enzyme secreted by them. अब पहला एंजाइम secret होता है वो है पेप्सिन. पेप्सिन कभी secret ही नहीं होता. It is secreted in the form of inactive form known as pepsinogen, which is converted into active form pepsin in the presence of. Hydrochloric acid. तो अब चलो रिएक्शन देखना. Pepsinogen, HCl, pepsin. फिर लिखा है what is the function of pepsin? It breaks down proteins into peptides. Proteins are complex substances. Peptides are chain of proteins. They are not simple. वो भी complex ही है, पर complex से थोड़ा कम और simple से थोड़ा ज्यादा. So complex देखा जाए तो ऐसा है. ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो एक फंक्शनल प्रोटीन है जो 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, 4 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बने हुए हैं. ये रेड कलर का चेन है, ब्लू कलर का चेन है, ग्रीन कलर का चेन है, येलो कलर का, अलग अलग चेन से बना हुआ है. सो व्हेन आई ब्रेक डाउन इनटू पेप्टाइड्स, ये पहला ब्रेक डाउन होगा बॉन्ड्स. एक्चुअली आपके बुक में पेप्टाइड डायरेक्टली दिया है, जबकि ये पहला ब्रेक डाउन होगा 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में. इनको बोलते हैं पेप्टोन्स. And then these peptides separate out to form small chains. These chains of proteins or amino acids are known as peptides. Peptides chain है. अब these peptides are then broken into small fragments. वो chain को अपन एक एक पार्ट में break down करते हैं. वो एक एक पार्ट क्या है? Amino acids. Am I clear? Then आता है prorenin is converted into HCl into renin. Again an enzyme जो बच्चों में ज्यादा होता है because they are only feeding on the milk. Milk protein casein is converted into paracasein in the presence of enzyme renin. As we progress with the age थोड़ा कम होते जाता है इसका इफेक्ट, पर बच्चों में ये बहुत ज्यादा फंक्शन होता है because वो सिर्फ दूध पे ही रहते हैं. Till the age of 4 or 5. 1 or 2. तो 4 या 5 तो दूध पीते रहता है, सिर्फ दूध पीता है. Then the food stays in the stomach for about 3 hours. So 4-3 घंटा लगता है, and that is why children it is very important to understand. सिर्फ understand करना है, समझना नहीं. Okay? Because जिसे समझ जाओगे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा. क्या सर? खाना खाने के बाद बोला जाता है कि immediately सोना नहीं है 3 घंटे. पर अपन क्या करते हैं? यहाँ पे खाना खाया, बाकियों का तो नहीं पता, तो मेरा होता ही है. Because by the time I reach home 9:30-10 बजे भूख लगी है, खाना खा लिया, 10-15 मिनट टाइम पास किया, कुछ किया, फिर तो नींद आती है. Okay? And that's the effect. Now the pylorus open intermittently to allow the chyme to move the intestine little by little. Chyme is the pulp जो सब कुछ स्टमक के अंदर बना. तो क्या होता है सर? क्या? डाइजेस्ट होने से पहले सो लिया तो कुछ नहीं होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, बॉडी में फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा और एसिड रिफ्लेक्स ज्यादा होगा, ब्लोटिंग ज्यादा होगा. सो तो जब खाना आधा रखा है पेट के अंदर, सोते हो अपन सीधा सोते नहीं है, तो अपन पेट पे सो रहे हैं, कुछ भी है तो पूरा आने के चांसेस हो. नेक्स्ट, खाना खाने के इंस्टेंटली बाद नहाने भी क्यों नहीं बोलते? ओके, टेम्परेचर डिफरेंस करना.
नेक्स्ट कम्स दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक का ये वॉल ओपन हुआ और फूड आगे गया into the largest part of the longest part of the alimentary canal known as small intestine. Small intestine is about 7 meters long. 7 meters सोचना. And सबसे important 2.5 सेंटीमीटर वाइड. इतना सा होता है. और इतने से पार्ट में कितना ठूसते हैं अपन. Okay? उधर से पास होते रहता है. Highly coiled structure, folded in abdomen. It 3 regions: duodenum, jejunum and ileum. Duodenum immediately जो stomach से बाहर निकलता है short curve. So short upper part next to stomach. Duodenum means 12 finger width in length. तो 12 finger का width जो होता है उसको बोलते हैं अपन duodenum. Okay, the common bile duct open into this part. Common bile duct मतलब जहाँ पे bile duct और आपका pancreatic duct दोनों साथ में open होता है. That is common bile duct. Jejunum, next short region of the about 2 meters in length. Okay, jejunum means empty because it is nearly about empty after death, as it found in dissections or in postmortem. Postmortem में आपको हमेशा ये खाली दिखाएगा. Last part ileum 4 meters means to twist roll, referring to twisting movements of this part. सबसे ज़्यादा coil जो part होता है वो ये होता है, is almost 4 meter जहाँ पे सबसे ज़्यादा absorption होता है. So we continue from this. And other than the